Atlanta just flipped upside down. And no, it ain't because of a Falcons game. We're talking about Love and Hip Hop, the franchise that's turned drama into an Olympic sport. And this time, the gold medal goes straight to Yandy and Rasheeda. Forget the Kardashians. They look like Girl Scouts selling cookies compared to this madness. Picture this. Two of the franchise's so-called queens of class suddenly ripping into each other like it's WrestleMania. But with lace fronts, stilettos, and receipts hotter than McDonald's coffee. Yandy, the self-proclaimed businesswoman with a heart of gold? Yeah, turns out her halo just slipped and smacked somebody in the face. And Rasheeda, the boutique boss who preaches loyalty? She's out here exposing secrets so wild. Even TMZ had to clutch its pearls. Whispers say contracts were threatened, marriages got dragged, and friendships torched faster than Usher's Vegas residency tickets. Fans are screaming, memes are flying, and the internet is officially on fire. This isn't just drama. This is Atlanta's own version of a nuclear meltdown. Buckle up, because once we peel back the layers of this scandal, you'll realize the cameras didn't even catch half of the chaos. When people talk about Atlanta, they usually mention hip-hop, trap music, lemon pepper wings, and a nightlife so wild it could put Las Vegas into early retirement. But today, Atlanta is trending for something way messier. Yandy Smith and Rasheeda Frost going nuclear on Love and Hip Hop Atlanta. Now, let's be clear, these two weren't supposed to be the problem. If anything, Yandy and Rasheeda were painted as the grown women of the franchise. The ones with businesses, marriages, kids, maturity. Basically, the producers sold them to us as the responsible aunties of reality TV. But child, that image just got shattered like a cheap wig in a windstorm. Let's start with Yandy. For years, she's been rocking this polished image, the business mogul with a sprinkle of humanitarian glow. She's out here holding protests, feeding communities, selling us the idea that she's Mother Teresa dipped in designer heels. But don't be fooled. Behind the glam, Yandy is a strategist. She plays chess, not checkers. And according to whispers in Atlanta's VIP lounges, she's been moving pieces behind Rasheeda's back like a puppet master at a circus. Rasheeda, on the other hand, has always been the boutique boss, the loyal wife, the rapper turned businesswoman who built her empire brick by brick. She's been through storms with Kirk Frost. And trust me, we've all seen those cheating storylines that made viewers throw remotes at their TVs. So when Rasheeda steps into the scene, people expect poise. But guess what? Even the classiest boss chick has her breaking point. And Yandy just pushed her to it. The crack in their friendship wasn't some minor, you didn't tag me on Instagram nonsense. Oh no, this was deeper. We're talking about money, brand deals, alliances, and rumors so nasty you'd think they were pulled straight from a deleted Real Housewives script. Sources say Yandy allegedly tried to slide into a sponsorship deal Rasheeda had lined up for her boutique. Imagine spending years building your brand, only for your supposed sister-in-arms to undercut you like a coupon at Walmart. And if you know Rasheeda, you know she doesn't keep quiet. She's not one to scream in the streets, but when she claps back, baby, she claps back with PowerPoint presentations worth of receipts. Cameras reportedly caught Rasheeda hinting that Yandy was using community activism as a publicity stunt, a PR tool to boost her own business ventures. In other words, Rasheeda basically told the world, don't be fooled by Yandy's halo, it's spray-painted gold from Dollar Tree. The first reactions? Whew, social media did what it does best, explode like a microwave burrito. Memes of Yandy holding picket signs saying, "Pay me," popped up faster than Beyoncé tickets sold out. Fans dragged Rasheeda too, saying she was bitter and jealous, the same way people accuse Nicki of being salty every time Cardi drops a new hit. It turned into Team Yandy versus Team Rasheeda, with Twitter spaces sounding like WWE commentary. One fan tweeted, "I thought Rasheeda was the calm boutique owner, not the shade assassin." Another wrote, "Yandy talks like she's Michelle Obama, but fights like she's Jocelyn Hernandez." And honestly, both are accurate. Here's where it gets even spicier. Allegedly, Yandy confronted Rasheeda on set about spreading lies. But instead of diffusing the situation, Rasheeda doubled down. Word on the street is she brought up old skeletons, hinting at Yandy's past management drama with artists. You know, the tea everyone thinks they know, but nobody ever really confirms. Suddenly, all those whispers about Yandy finessing contracts resurfaced. It was like Rasheeda cracked open Pandora's box and tossed it into the middle of production. The production crew, they didn't know whether to keep rolling or call security. But of course, they kept rolling. VH1 knows when ratings gold is unfolding right in front of their cameras.
Rumor has it even the producers were shook because this wasn't scripted shade. This was real heat. Let's not forget, Love and Hip Hop thrives on chaos. But usually, it's the younger cast members who deliver it. Seeing Yandy and Rasheeda go toe-to-toe felt like watching your mom and your cool aunt fist fight at Thanksgiving dinner. You don't want to watch, but you can't look away. And once that first punchline landed, the internet smelled blood in the water. Atlanta bloggers went crazy. YouTube lives popped up with titles like Yandy exposed for fakery and Rasheeda finally snaps. Kirk somewhere laughing. Even gossip sites outside the hip-hop scene picked it up. Suddenly, what started as a business spat turned into Atlanta's version of the Cold War. Alliances formed overnight. Spice reportedly sided with Rasheeda, while Carly Red, of course, played both sides because, well, she's Carly Red. The best part? The husbands got dragged into it. Kirk Frost, who usually tries to stay on Rasheeda's good side, allegedly muttered something about Yandy being too fake. And Mendices? He stood by his wife, but insiders claim he whispered to a producer that Rasheeda was jealous. Imagine being so messy. Your man turns into a background commentator for your feud. The leak of this beef didn't just spark a fire, it torched the entire Atlanta skyline. Suddenly, viewers were questioning if Yandy's businesswoman act was smoke and mirrors. And Rasheeda? People started side-eyeing her loyalty brand, asking how real it really is if she's out here airing dirty laundry like it's Sunday wash day. By the time the first clips leaked online, it was already too late. The narrative wasn't just about a fight, it was about a betrayal. Two women who branded themselves as the grown ones just proved they could outdrama anyone half their age. The internet crowned them the new villains of Love and Hip Hop. And let me tell you, if you thought this was just a one-and-done spat, oh no, this was only the spark. The real explosion was yet to come, and when it did, it made the Kardashians look like they were fighting over who finished the last salad at Nobu. जो लोग सोच रहे थे कि यान्डी और रशीदा का क्लैश सिर्फ एक शॉर्ट टर्म स्पट है, उन्हें पता चल गया कि ये बस शुरुआत थी। जैसे ही पहले लीक्स, ब्लॉग्स और ट्विटर पे गए, पूरा अटलांटा डिवाइड हो गया। एक तरफ टीम यान्डी और दूसरी तरफ टीम रशीदा। सोशल मीडिया पे हर कैप्शन, हर आउटफिट, हर साइड आई को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया जैसे ये CSI का हिप हॉप एडिशन हो। लोग पुराने क्लिप्स दोबारा देखने लगे। एक फन ने एक सीन स्लो मोशन में दिखाया जिसमें यंदी अलेजिडली रशीदा के बुटीक लॉन्च पे आंख रोल कर रही थी। क्या ये सिर्फ एक ब्लिंक था या फिर शेड? इंटरनेट ने फैसला सुना दिया, डेफिनेटली शेड। और फिर आया सेलिब्रिटी सर्कस। स्पाइस सबसे पहले फील्ड में उतरी। इंस्टाग्राम लाइव पे उसने बोला, "My tired of these fake empowerment, kill them. Talk about boss chick but move like snake." ट्रांसलेशन, स्पाइस ने सीधा रशीदा का साइड लिया और यान्डी को फेक एक्टिविस्ट टैग कर दिया। फैंस ने ब्लू हार्ट्स भेजने शुरू कर दिए और रशीदा के सपोर्टर्स ने स्पाइस को क्वीन डिक्लेयर कर दिया। कर्ली रेड, जो हमेशा से ह्यूमन फायर अलार्म रही है, अपना क्रिप्टिक पोस्ट डल गई। Some friendships ain't friendships, they business ships। बस इंटरनेट ने तुरंत इससे भी एविडेंस की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। हर कोई अपना एनालिसिस चला रहा था जैसे कोर्ट रूम में लॉयर्स हो। इवन कंडी बरस ने इनडायरेक्टली कमेंट किया, When people show you who they are, believe them the first time। ऐसा लग रहा था जैसे अटलांटा का पूरा रियलिटी टीवी रॉयल्टी अपना पॉपकॉर्न लेकर रिंग साइड में बैठा हो। फैंस ने मीम्स बनाने में जीरो टाइम वेस्ट किया। एक वायरल पोस्ट में रशीदा को थानोस बना दिया गया, स्नैप करते हुए कैप्शन दिया, Half of Yandy's reputation just disappeared। दूसरे मीमे में यान्डी को एक प्रोटेस्ट साइन पकड़ा कर दिखाया गया जिसमें लिखा था, Justice for brand deals। मतलब सोशल मीडिया ने इन दोनों को रोस्ट कर दिया जैसे थैंक्सगिविंग टर्की, लेकिन असली बॉम्ब तब गिरा जब एक ऑडियो लीक हुआ। अलेजिडली एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में यंडी एक प्रोड्यूसर से वेंट कर रही थी। उसमें आवाज सुनाई दी जो फैंस कहते हैं यंडी की है, Rasheeda don't move units, she just dresses mannequins and prays Kirk don't cheat again। बस ये लाइन ने इंटरनेट को तोड़ दिया। टीम रशीदा ने यान्डी को ड्रैग किया, कैसे तुम एक ब्लैक वुमन के हसल को डिस्क्रेडिट कर सकती हो। टीम यान्डी ने बोला ऑडियो फेक है, AI जनरेटेड है, कर्ली रेड ने लीक किया है क्लाउड के लिए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैक्ट्री लाइन की तरह चर्न होने लगी। बैकलैश इतना बड़ा था कि दोनों को इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स डालनी पड़ी। यान्डी ने अपनी यूजुअल पॉलिश टोन में लिखा, Don't let the lies fool you. My activism and my work stand for themselves. I will never tear down another black woman for clicks. Woman for clicks. Rasheeda ने सीधा tier छोड़ा। Don't bite the hand that fed you, then call it sisterhood. I've been solid since day one. फैंस ने स्क्रीनशॉट्स को वायरल कर दिया और दोनों के पोस्ट ट्रेंडिंग बन गए। हर एक ने अपनी तरफ की क्वीन को डिफेंड किया और दूसरी को ड्रैग कर दिया। इस ड्रामा में हस्बैंड्स भी खींच लिए गए।
कर्क फ्रॉस्ट ने यंडी को क्लाउड चेजर बोला, लेकिन फैंस ने उससे ही ट्रोल कर दिया। नॉट कर्क टॉकिंग अबाउट लॉयल्टी व्हेन ही वाज चीटिंग इन अ जकूजी। मेंडिचीज ने यंडी के कमेंट्स में हार्ट इमोजीज डाले, लेकिन उसका भी मजाक उड़ा। मीम्स आए जिसमें उसको नाइट बनाया गया जो मैकडॉनल्ड्स ड्राइव थ्रू गार्ड कर रहा है। बाकी कास्ट ने भी अपने अपने शेड बरसाए। सियरा गेट्स ने बोला, एम्बैरेसिंग, दीज वुमेन टू ओल्ड फॉर दिस। जोक ने अपने रेडियो शो पे मजाक बनाया, यांडी एंड राशीदा फाइटिंग ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट्स लाइक मी फाइटिंग लिल स्क्रैपी ओवर हु इन्वेंटेड क्रंक। पब्लिक आउटरेज अब सिर्फ गॉसिप नहीं रहा था। थिंक पीसेस लाइक हेजा रहे दे टाइटल्स जैसे When empowerment turns into competition or the fall of love and hip hop's queens। डिबेट ये हो रहा था कि यंडी की एक्टिविज्म जेन्युइन है या सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। दूसरी तरफ रशीदा की लॉयल्टी भी अंडर द माइक्रोस्कोप आ गई। लोग कह रहे थे बम अगर वो इतनी लॉयल थी तो वो सेट पे दोस्ती का बंधा फोड़ती ही क्यों। टिकटॉक पर तो अलग ही सर्कस चल रहा था। यूजर्स विग्स पहनकर दोनों का रीनैक्टमेंट कर रहे थे। एक वायरल साउंड बना, नॉट द बुटीक यंडी, और बक्के तक इस फ्यूड के क्लिप्स लिप सिंक कर रहे थे जैसे ये कोई मार्वल विलन ओरिजिन स्टोरी हो। ओल्ड रिसीप्ट्स भी निकाले गए। फैन पेजेस ने अलग डीएम्स पोस्ट किए जिसमें यांदी पुराने टाइम से रशीदा के बारे में शेड मार रही थी। दूसरे क्लिप्स सामने लाए गए जहां रशीदा यांडी के इवेंट्स पे ऑकवर्डली क्लैप कर रही थी। हर चीज अब एक साइन लग रही थी। इस वक्त नैरेटिव बस ये था, कौन सर्वाइव करेगा ड्रैग फेस्ट। ये कोई फ्रेंडशिप की लड़ाई नहीं रही थी, ये ब्रांड वॉर्स बन गई थी। दो क्वींस अपना क्राउन बचाने के लिए एक दूसरे को पब्लिकली डिसमेंटल कर रही थी। और सबसे ज्यादा टेरिफाइंग चीज, दोनों चुप नहीं हो रही थी। हर साइलेंस एक न्यू स्टॉर्म का सिग्नल बन रहा था। हर इंस्टाग्राम स्टोरी एक क्रिप्टिक क्लू बन जा रही थी। और फैंस को मालूम था अभी असली धमाका आना बाकी है। जब स्मोक सेटल होने लगी तो सबको लगा कि शायद ये ड्रामा कूल डाउन होगा, लेकिन अटलांटा में स्मोक कभी फ्री नहीं होती, उसके पीछे हमेशा फायर होता है। और यंदी रशीदा के बीच जो आग लगी थी उसने सिर्फ उनके दोस्ती को नहीं बल्कि पूरे फ्रेंचाइज की क्रेडिबिलिटी को जाला दिया। सबसे पहले बात करें रेपुटेशंस की। यांडी जो हमेशा अपनी पॉलिश्ड बिजनेस प्लस एक्टिविज्म इमेज के लिए नोन थी, अब उसके ऊपर परफॉर्मेटिव एक्टिविस्ट होने का टैग चिपक गया। फैंस ने उसके प्रोटेस्ट क्लिप्स को रिमिक्स करके मीम्स बनाए। एक वायरल टिकटॉक साउंड बना जिसमें लोग साइन पकड़ के नाचे और कैप्शन दिया, व्हेन एक्टिविज्म इज जस्ट फॉर प्रोमो। जो चेहरा पहले कम्युनिटी लीडर का लगता था, अब लोग उसे एक ब्रांड अपॉर्चुनिस्ट कह रहे थे। दूसरी तरफ रशीदा भी सेफ नहीं रही। उसका लॉयल वाइफ लॉयल फ्रेंड नैरेटिव अब क्रैक्स दिखाने लगा। लोग कहने लगे कि अगर वो लॉयल्टी की गॉडेस है तो फिर उसने अपनी दोस्त की पोल खोलकर दुनिया के सामने क्यों रख दी। फैंस ने लिखा, शी एंट लॉयल, शी इज जस्ट कैलकुलेटेड। रशीदा का एम्पायर, उसका बुटीक, उसकी म्यूजिक कैटलॉग, सब दोबारा अंडर स्क्रूटनी आ गया। और फिर आए कॉन्सिक्वेंसेस। स्पॉन्सरशिप ब्रांड्स जो दोनों के साथ काम कर रहे थे उन्होंने डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। एक इनसाइडर ने बताया कि एक स्किन केयर लाइन ने क्वाइटली यंडी के कोलैबोरेशन को पॉज कर दिया। रशीदा के बुटीक के कोलैब एड्स भी 2 हफ्ते तक सोशल मीडिया पे गायब रहे। मतलब दोनों का पॉकेट गेम भी इस लादे का कोलैटरल डैमेज बन गया। शो के अंदर भी आफ्टर शॉक्स विजिबल थे। कास्ट मेंबर्स कैंप्स में डिवाइड हो गए। स्पाइस ओपनली रशीदा के साथ था, जबकि कर्ली हर तरफ का सीन कैप्चर कर रही थी जैसे नेशनल जियोग्राफिक का रिपोर्टर। जॉक और स्क्रैपी का मजाक अलग ही लेवल पे चल रहा था। और मोना स्कॉट, रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रोड्यूसर्स ने शैंपेन खोला क्योंकि उनके लिए ये मेल्टडाउन रियलिटी टीवी का जैकपॉट था। रेटिंग स्पाइक इतना बड़ा था कि नेटवर्क एग्जीक्यूटिव्स कह रहे थे, दिस इज बिगर देन जॉसलिन वर्सेस टीवी एरा। पब्लिक का रिएक्शन और भी ज्यादा ब्रूटल था। हर फैन अपने ही नैरेटिव लिख रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, एक केयरफुली स्क्रिप्टेड बीफ ताकि फ्रेंचाइज रिवाइव हो। लेकिन जो लॉग बैक स्टेज इनसाइडर्स को फॉलो करते थे उनका कहना था ये 100% रियल हीट है, क्योंकि यांडी और रशीदा का पर्सनल बॉन्ड सच में टूट गया था। और जब फ्रेंडशिप टूटती है वो ग्लू कभी 2 बरस स्टिक नहीं होता। एक और लेयर ऐड हुई जब मीडिया आउटलेट्स ने इस फ्यूड को कल्चरल डिबेट बना दिया। आर्टिकल्स लिखे गए, द प्राइस ऑफ ब्लैक फीमेल एम्पावरमेंट ऑन रियलिटी टीवी और व्हेन सिस्टरहुड सेल्स अंटिल इट डजंट। यंदी और रशीदा के नाम अब गॉसिप ब्लॉग्स के अलावा मेन स्ट्रीम थिंक पीसेस में भी हेडलाइन बन गए। मतलब स्कैंडल ने इनको गॉसिप से उठा के एक कल्चरल केस स्टडी बना दिया। और सबसे शॉकिंग फॉल आउट, फैंस कहते हैं कि कास्ट रियूनियन शूट पे दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। रिपोर्टेडली प्रोड्यूसर्स को अलग अलग एंट्रेंस बनानी पड़ी ताकि उनका कॉन्फ्रंटेशन फिजिकल ना हो जाए। एक इनसाइडर बोला, you could cut the tension with a butter knife. Rasheeda was ice cold. Yandy didn't even look her way. Imagine, वो 2 औरतें जो एक दूसरे को सिस कह के हक करती थी, अब एक दूसरे की प्रेजेंस को इग्नोर कर रही थी जैसे हाई स्कूल मीन गर्ल्स। इस फ्यूड का एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये भी हुआ कि बाकी कास्ट को अपनी विजिबिलिटी मिल गई।
सडनली कार्ली रेड के क्रिप्टिक पोस्ट्स, स्पाइस के लाइव्स और जॉक के जोक्स वायरल होने लगे। मतलब यंदी और रशीदा ने अपना एम्पायर रिस्क पे डाल दिया और दूसरे लोग क्लाउड कलेक्ट कर गए। पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी हवा में लटक रहा है, क्या ये फ्रेंडशिप का एंड है या फ्रेंचाइज का मास्टर चेस मूव? फैंस स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि शायद प्रोड्यूसर्स एक स्पिन ऑफ प्लान कर रहे हैं जिसमें दोनों को एक ही प्रोजेक्ट में फिर से दल दिया जाए। क्योंकि रियलिटी टीवी का गोल्डन रूल ये है, जहां दुश्मनी वहां डॉलर साइंस। लेकिन अगर पर्सनल डैमेज देखा जाए तो दोनों की इमेज हेविली डेंट हुई है। यांडी का एक्टिविस्ट और अब मीम बन गया है और रशीदा की बुटीक क्वीन एनर्जी अब डाउट के नीचे है। दोनों का ब्रांड एक दूसरे को एक्सपोज करते करते खुद एक्सपोज हो गया। और ये जो आफ्टरमाथ है ना, वो खुद एक क्लिफ हैंगर है। क्योंकि जैसे ही फैंस सोचते हैं कि स्टोरी खत्म हो गई, कोई नया लीक, कोई नया क्लिप, कोई नया सब ट्वीट आ जाता है। जैसे ये स्कैंडल अपना खुद का सीक्वल लिख रहा है। रियलिटी टीवी ने हमेशा ड्रामा बेचा है, लेकिन ये ड्रामा, ये एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था जिसमें दोनों क्वींस अपने अपने थ्रोन के लिए लड़ रही थी। और एंड रिजल्ट, फैंस का कहना है, this makes the Kardashians look boring. So fam, after watching Yandy and Rasheeda go from sisters in bossness to enemies in chaos, you gotta admit one thing. Love and Hip Hop Atlanta just invented a whole new level of drama. Forget Marvel movies, forget Game of Thrones. This is the real multiverse of madness, and it's happening with wigs, boutiques, and Instagram captions. Now, here's where you come in. If you sat through all this tea and didn't smash that like button, you're basically disrespecting the spirit of messy reality TV. Smash that like button like it owes you money. Hit subscribe like you're signing divorce papers. And drop a comment like you're Rasheeda exposing a fake activist. I want to see your takes, your memes, your savage one-liners. Because let's keep it real. Scandals don't sleep, and neither do we. Tomorrow it could be Spice versus Carly, Jock versus Scrappy, or Kirk versus Common Sense. And trust me, the second the chaos hits, Celeb Rux is dropping the receipts hotter than a Popeye's biscuit with no water. So don't just watch from the sidelines. Join the circus. Hit that notification bell so loud your neighbors think you're starting a protest. Because on this channel, the drama is endless, the tea is boiling, and the shade is free refills. And remember, when Atlanta explodes, when friendships collapse, when halos slip and boutiques burn, there's only one place you'll get the raw, sarcastic, outrageous breakdown that makes even the Kardashians look like a Sunday school picnic. This has been Celeb Rux, where chaos is currency and scandal is our love language. And scandal is our love language.